अगर हूँ तो प्लीज़ लेट मी नो with a thumbs up in the comment box. क्या मैं visible और audible हूँ? Please let me know with a thumbs up in the comment box so that I can continue. Thank you so much. Thank you. Please all of you stay connected till the end. Am I visible and audible to all of you? Please let me know with a thumbs up, please. Thank you so much, ma'am. Thank you. A request to all of you, please increase the brightness of your phone so that you can clearly see me. Please brightness बढ़ा लीजिए फोन का. फोन को रोटेशन मोड में रख दीजिए जिससे आप इस तरह से फुल स्क्रीन में देख पाए मुझे, लैंडस्केप मोड में. वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. प्लीज मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा. Thank you so much, ma'am, Mrs. Kaur. Thank you so much for viewing me in the laptop. It is so amazing to see my old teachers viewing me. All of you, please stay with me till the end. और प्लीज़ आप लोग अपना ब्राइटनेस इंक्रीज कर लीजिए फ़ोन का, जिससे आप अच्छी तरह से मुझे देख पाए, क्लियरली मैं विजिबल हो पाऊँ. स्टे कनेक्टेड. अभी कुछ ही देर में लाइव परफॉर्मेंस मेरी स्टार्ट होने जा रही है. आई होप आप सभी को अच्छा लगेगा. अपना आशीर्वाद बनाए रखें और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ शेयर करें. थैंक यू सो मच जेठू. थैंक यू. प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा. It is so good to find you all viewing me. Thank you so much. It gives me a lot of encouragement. अपने फोन्स के ब्राइटनेस को इंक्रीज कर लीजिएगा और फ़ोन का रोटेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आप मुझे लैंडस्केप मोड में देख पाए और ये पूरा स्क्रीन में मैं विजिबल हो पाऊँ. शुक्ला मैम, थैंक यू सो मच.
you so much, Orgo. Thank you. Please stay connected with me till the end, जिससे मैं और अच्छे से परफॉर्म कर पाऊँ. आप सब यहाँ पर आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. Thank you, Jetu. Thank you so much. सभी यहाँ पर आए हैं, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि आप सब मुझे देखने के लिए लाइव आए हैं. अभी इतने बिजी टाइम में, इतना पैथेटिक टाइम में आप लोग आए हैं, थोड़ा सा समय निकाल कर. मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. Amazing to see my Loreto teachers here. I used to perform in the stage of Loreto, I remember, and now I'm so happy कि मैं उनके साथ इतने दिनों तक connected हूँ कि आज मैं यहाँ पर कोरोना के समय में भी परफॉर्म कर रही हूँ, तो वो मुझे व्यू कर रहे हैं वहाँ से, अपने घर से. Thank you, Sonali. Thank you so much. Nice to see you. Okay. A very good evening to all of you present here. Myself, Trisha Tanya, and I am here to perform a Odissi dance recital in front of you. Odissi dance is an ancient classical dance of India which has its origin from the Hindu temples of Odisha. First and foremost, I would like to thank Chumki Roy ma'am for organizing such a wonderful event, Arohan, under the banners of symphony music. The best part of this event is that it has been organized to propagate the Indian classical dance. I have been learning Odissi dance since 10 years from my guru, Srimati Sabita Mishra ji. Under her guidance, I have completed Nritya Bhaskar Part 2 in Odissi. My dance journey began with Kathak dance. I have learned Kathak dance as well as Indian contemporary dance from Guru Sri Vipul Nayak ji as well as Guru Sri Devjyoti Naha ji. Along with this, I have also learned Kathak dance from Guru Sri Kajal Bose from Asansol. All my gurus have played an eminent role in my life, and I just thank them from the bottom of my heart. Without much delay, I would like to begin my performance with Mangla Charan. Mangla Charan marks the entrance of a dancer onto the stage. A dancer first worships God Jagannath and seeks his blessings for the auspicious beginning of the performance. Today's Mangla Charan is Padabande. It is based on Tal, Ek Tal, Tripata Tal as well as Tisra Rupak Tal. I hope that you all will enjoy the performance. A special request to all of you to stay connected till the end and view my performance and share your love in the comment box. Thank you so much.
sharing your views, comments in the comment box. कोरोना वायरस 2019 में चाइना के एक छोटे से शहर वुहान से आया और जिस तरह से वो दुनिया को तहस नहस कर दिया, ये बहुत ही बुरी बात है। हम सब अपने रिलेटिव्स, बहुत करीबी लोगों को, अपने प्रियजनों को खो चुके हैं। इस सिचुएशन में जब हम इतने दुखी हैं, एक भयानक सा वातावरण है, इस सिचुएशन में जब हम मनुष्य को थोड़ा सा खुशी मिल जाता है, थोड़ा सा खुशी भी मिल जाता है, तो हम उसे अनुभव करने का कोशिश करते हैं, उसी में रहने का कोशिश करते हैं। आज हम सब यहाँ पर हैं सिम्फनी म्यूजिक के स्टेज में। हमें तहे दिल से चुंकी मैम को धन्यवाद करना चाहिए कि आज उनकी वजह से, उनके एफर्ट्स के कारण इतने बुरे समय में भी, पैंडेमिक के समय में भी, हम सब कुछ पलों के लिए ही सही, बट इन चीज़ों को भूलकर हम आज संगीत में लीन हो चुके हैं। हम एक और चीज़ जो मैं कहना चाहती हूँ कि एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। हाँ, कोविड हमारे लिए बहुत ज़्यादा, और आप वहाँ पे फोन में देख रहे हैं, आज टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है कि हम इतने दूर बैठकर भी, इतने डिस्टेंस में होकर भी आज एक दूसरे को कम से कम देख तो पा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। Mukul Roy sir, good performance, keep going, God bless you. Thank you so much sir. Partha Sen sir, nice performance, enjoyed. Thank you Jetu. Bani Roy ma'am, darun presentation. Thank you so much. Mami ma, thank you so much. Shamit Das sir, thank you so much. Jayashree Mukherjee ma'am, thank you so much. Reba De ma'am, thank you so much. Anushka Roy, thank you so much Dona.
Sonali Kar, thank you so much. Okay. Ranjan Sen sir, very nice performance, carry on. Thank you Chetu. Okay, so let's move on to the next performance. My next performance is a Pallavi. Pallavi is a pure dance form. In this dance item, a dancer molds her body into various gestures to form postures like a soft leaflet. Today's Pallavi is based on Rag Sankravarnam. It is based on Tal, 8 Tal. I hope that you all will enjoy the performance. Please stay with me and please like and view my performance with love and share your comments on the comment box so that it encourages me even more. Thank you so much.
Thank you, Mukti auntie. Thank you, Shukla ma'am. Thank you, Samit sir. Please share the video. Please share the live so that we could reach a wider audience. Indian classical dance, I feel that somewhat it is extinguishing from our own India. It is such a rich dance form. It is such a rich dance that it can bind the audience as well. But I don't know why it is vanishing from India. It is the effort of symphonic music that it is taking such a great initiative and propagating classical dance. Okay, I hope you all are enjoying. So, moving to the next performance. My next performance is a Abhinay. Abhinay is the art of expressions. It is the dance item in which a dancer expresses and connects to the audience through her facial expressions, facial gestures, and it uses its various facial elements such as eyebrows, eyes, lips to convey a message to the audience. Today's Abhinay is Shrita Kamala. It has its origin from Kavi Sri Jaidev. It praises Lord Vishnu and his incarnations, avatars. One who resides in the heart of Lakshmi Ji. One who defines and beautifies the solar system. O Lord Hari, we worship you. O Hari, we hail you. Aapki jai ho. You have killed demons like Kalya Nag, Madhu, Mur and Narak. The eternal rider of Garuda. Hey Hari, Aapki jai ho. You have rescued Mata Sita from Ravana. Hey Ram, hey Hari, Aapki jai ho. इस अभिनय में मैं सबसे प्रथम अंश में विष्णु जी की वंदना कर रही हूँ। उसके दूसरे अंश में मैं भगवान विष्णु ने जिस तरह से कालिया नाग को मारा और हम सबको बचाया, He has rescued us from Kalya Nag. इसे मैं दर्शा रही हूँ। आगे नरक, मधु, मुर नामक भयानक राक्षसों को जिस तरह से भगवान विष्णु ने विनाश किया है और हम लोगों को बचाया है, इसको दर्शाया गया है। आगे माता सीता को राम रेस्क्यू करते हैं, बचाते हैं और रावण को जिस तरह से रावण का विनाश करते हैं, इसे दर्शाया गया है। यह
कवि श्री जयदेव द्वारा रचित है और इसके अंतिम अंश में हम कवि जयदेव की वंदना करते हैं, उन्हें याद करते हैं कि वे इस अभिनय, इस संगीत की रचना किए हैं। I hope you all will love this performance. I hope that my message connects to you. I can express my emotions through my facial expressions. Please stay connected. This is the last item of the eve. So please enjoy and share your views in the comment box. Thank you.
Jaya
performance. Again, a very big thanks to Chumki ma'am for organizing such a wonderful, mesmerizing, amusing, I don't have words to express. Thank you so much for organizing this here in Ranchi during this pandemic time. Thank you. I would request all of you, please come up and show your talents here. Let's together uphold the pride of Indian classical dance together so that we can, as well as our next generation, can abide the values and cultures which India once had and is known for worldwide. I would like to thank, of course I would like to thank my parents who have organized, who have helped me to organize everything, right from the lights, cameras, costume, makeup, music, live, connecting, everything. Without you, it would have not been possible. A special thanks to my sister, Tonni Trishita. She is capturing the whole event and she was even more enthusiastic, even more than me. Right from the morning, making the posters, drawing, then putting the setups. I'm just thankful to her too. Thank you so much. And of course, the audience, the virtual audience who are connected with me right now till the end and sharing your views, loving me so much. I'm very, very grateful to you all. Thank you so much. With this, I end my live performance. I hope you all have enjoyed. If there is some technical flaws or any flaws from my side, then I'm sorry. Please, thank you so much and please love me in future also. Thank you. Good night. Shubh Ratri.